इंडिया में बहुत दिन से फिल्म के ऊपर बहुत काम हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन एंड क्यूरेशन के ऊपर इतना अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बहुत जगह तो फेस्टिवल हो रहा है, मगर वो जो फेस्टिवल के लिए जो फूड है वो फिल्म से होता है। हमारा इंडियन फिल्म्स का बहुत लंबा इतिहास है, फिल्म मेकिंग का, फिल्म मेकर का, डिफरेंट कंटेंट का। उसको लेके हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सोचा, ताकि जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, नेशनली जो काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोग इधर आएंगे एंड पब्लिक को बोलेंगे रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, पब्लिक विल पार्टिसिपेट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग सोचा कि इधर से कोलकाता से इसको शुरू करें, क्योंकि बंगाल जो होता है ये फिल्म का मेन हब है, मेन सेंटर है। हिस्ट्री के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है, उसको लेके आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है प्रीमियर फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहां से हमने शुरू किया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, जहाँ पे NFDC हमारा साथ है, और NFI नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो इंडियन हेरिटेज मिशन, सिनेमा हेरिटेज मिशन के अंडर काम कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोर फिल्म्स है, मगर फिल्म रेस्टोर करने से नहीं होता है, उसको दिखाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, उसके बारे में यंग जनरेशन को पता होना चाहिए। इसीलिए हमने इसको सोचा है। एंड और एक बड़ा चीज है, हम लोग जो फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, जैसे फिल्म डायरेक्शन है, प्रोड्यूसिंग है, साउंड डिजाइनिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, मगर ये क्यूरेशन रेस्टोरेशन के ऊपर करिकुलम कुछ नहीं है। चीज है कि आपका जो फिल्म बर्बाद हो रहा है उसको आप रखेंगे। देखिए टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, जैसे सेलुलॉइड बेस्ड था, सेलुलॉइड का फिल्म इसके एक फिल्म के ऊपर दूसरा फिल्म रह के वो बर्बाद हो रहा था, उसको ला के डिजिटल फॉर्मेट में फिर डाल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है प्रॉपर्टी, ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको हम कभी सोचा नहीं है कि उसको रख के आगे बढ़ाएंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचा है, जो फिल्म हेरिटेज मिशन जो है उसके अंदर बहुत सारे फिल्म जो है उसको लेके उसको डिजिटाइज करके उसका अपग्रेड करके उसका क्वालिटी अभी रख रहे हैं। वो रखने से नहीं होगा, उसको फिर बाहर दिखाना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च होना चाहिए। ये सारा इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन से शुरू होना चाहिए, ये सोच के SRFTI took a lead role in it. The initiative titled ARCUREA is all about three important verticals, which is archiving, curating and restoring, with a special focus on the heritage of Indian cinema. We at SRFTI, being a national film school which imparts training to students in the art and crafts of studying cinema, thought this has to be an important initiative, because through this process we are not only disseminating idea of the cultural heritage of Indian cinema, but also trying to develop a new breed of filmmakers who think about curation, archiving and restoring very seriously. So what we did from an educational point of view is trying to create a conclave or a sort of an event with several verticals. So what you saw are these verticals, which are all now linked to this whole idea of how we could keep or preserve the idea of Indian cinema. So then we try to look at the verticals in detail. So for example, we have an international colloquium on archiving and curation, on archiving and restoration. This is a technical session. In the technical session, we are looking at the ethics, the shift in technology, policy making. We are calling administrators, policy makers, archivists, researchers to specifically look at these two important verticals, which is archiving and restoration.
one of the important flagship vertical is called the Cinema Curation Workshop, where we are inviting students of cinema to participate, to look at the curatorial knowledge that is needed to understand in depth and meaning about cinema. Then another vertical is the Restored Film Festival. This is done in association with the National Film Archives of India in Pune, where there has been a very important process as part of the National Film Heritage Mission, where the focus has been to restore cinemas of India. So what we did is that we have created a curatorial package focusing on cinemas of India, which represents all the regional languages of India. This is one thing. The other program that we have is the exhibition, which is related to film memorabilia, and which is also curated. Another important vertical we have is live performance, which is also curatorial, where musicians, performance artists, a lot of people are coming together. One of the important live performance is having a restored film of an early Bengali film called Bahula. It's almost 104-year-old, and we are having a live music performance, which we call the cinema concert. This will happen just after the inaugural. We are also inaugurating the first the Pramod Pati Cinema Art and Technology Museum, which will be open to the public, where you can get an idea about technology and also the craft and advent and the growth of Indian cinema. This will be especially helpful for students of cinema and also for the public.